सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ऐवान पार्लियामेंट में कहा कि मोदी हुकूमत भारत के विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है। बैरिस्टर अवैसी ने पार्लियामेंट में हुकूमत से सवाल किया कि जब भारतीय आसार क़दीमा सर्वे ASI में 6516 असामियाँ खाली पड़ी है तो मुल्क के तारीख़ी विरसे का सही तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि यादगारों की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दामात ना होने की वजह से मुल्क के सक़ाफ़ती और तारीख़ी विरसे को शदीद ख़तरा अल्लाह है। Speaker sir, out of a sanctioned strength of 15,276, there are 6,516 vacancies in Ministry of Culture, attached officers and autonomous organizations. And it must be remembered that this government has been in power for last 11 years. Sir, my first supplement to the Honourable Minister is, with over 67 vacancies in conservation branch and significant shortfalls across key divisions like archaeology and epigraphy, how does the ministry assure this house that centrally protected monuments are being adequately maintained and preserved? What specific measures are being taken to address the impact of these shortages on research, heritage, management, routine conservation? The reason I ask this question, sir, that CAG report of 2013 highlighted 92 untraceable monuments. In 21, they have accepted 24 remain missing alongside 501 untraceable objects in Anthropology section. Why has the government failed to prioritize filling critical ASIs? And does he know that there are water leaks, cracks, vegetation growth on Taj Mahal? How do you justify your failure to ensure proper upkeep even for India's most iconic monuments? And does he have the manpower in ASI to protect Taj Mahal and the beautiful Charminar? Second supplementary is, has the ministry considered the standing committee recommendation to develop a dedicated management cadre within ASI for daily administration of centrally protected monuments, including visitor management and executive measures? Do you have any plans to bifurcation of ASI into two wings, one focus on exploration, excavation and conservation, and other handling revenue generating activities? Sir, lastly, the National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property is operating only at 24% sanctioned strength with 25 employees against 103 sanctioned posts. Is it not true that it impacts the ministry's critical research, preservation, restoration? And lastly, what steps is this government taking to ensure that the ASI is detoxified? Because from last 50 years, ASI has become a handmaiden of Hindutva ideology. Whether they will ensure that ASI works according to the cause of our constitution, that is secularism and pluralism. मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।